Hello everyone and very good afternoon. I hope you all are good. तो previous class में we discussed what unit and dimension हमने discuss किया था. Since we couldn't teach this topic, that is why I took a bit more time to revise it, is what I would say. So revision session for the unit and dimension को मैंने दो क्लास में डिवाइड किया. That is the reason. क्योंकि क्लास नहीं हुआ था इसका, है ना. एंड इन प्रीवियस क्लास मैंने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया. ओनली थिंग लेफ्ट वाज एरर. उसके बाद आज हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व. ठीक है, चलो. तो एरर कैलकुलेशन को बस हमें देखना है. वी डिड एवरीथिंग. आई मीन डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल फॉर्मूला, how to find number of significant digits, how to round off certain things, what is types of, what are the types of errors, I mean systematic, random and list count error. Also we study difference between accuracy and precision, जिसमें क्वेश्चन तुम्हारा certain रीजन का बन सकता है in need. So we learned whole these things. Today in the class I will start with error का calculation and then we will move on with the question solving. ठीक है, so let's start with this. जैसे कोई भी चीज को जब हम मेजर करते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है. क्योंकि ह्यूमनली इट्स नॉट पॉसिबल कि हम कैलकुलेशन, आई मीन हम मेजरमेंट एक्यूरेट ले पाए. कुछ ना कुछ एरर हो जाता है. दैट एरर मे बी वेरी 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 स्मॉल बट स्टिल दैट इज देयर. सो वी, हमारा टारगेट क्या होगा? हमारा टारगेट ये होगा कि हम जो भी मेजर कर रहे हैं उसको एक्यूरेटली मेजर कर सके, नियर अबाउट एक्यूरेटली, राइट. वो कैसे कर सकते हैं? सपोज कर लो आपके पास एक रॉड है और आप इस रॉड के लेंथ को मेजर करना चाहते हो. यू विल यूज सर्टेन डिवाइस. सपोज यू आर यूजिंग स्क्रू गेज और नॉट स्क्रू गेज, लेट्स से यू आर यूजिंग मीटर स्केल. ठीक है, इसको मेजर करने के लिए हमने क्या यूज किया? मीटर स्केल यूज किया. एंड वी विल गेट सर्टेन मेजरमेंट, राइट. तो मैंने क्या किया? मैंने मेजरमेंट 5 बार किया. So first time what I got is 1.123. Second time what I got is 1.134. Third time what I got is 1.135. और चौथी बार जब मैंने मेजर किया तो मुझे मिला कुछ ऐसा. और पांचवी बार जब मेजर किया देन आई गॉट समथिंग लाइक दिस. ठीक है, सो वी हैव 5 मेजरमेंट्स. डन. हर बार हमें कुछ ना कुछ अलग मिला है. देर आर सर्टेन डिफरेंसेस, राइट. सो इसको चेंज करती हूँ, ठीक है, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है. इतना डिफरेंस मिलेगा नहीं. इतना डिफरेंस मिल रहा है मीन्स एरर बहुत ज्यादा है, राइट. सो हमारे पास 5 मेजरमेंट है. इन सबको नियर अबाउट एक्यूरेट करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब का मीन लेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वैल्यू को सपोज कर लो आपने A1 बोला, सेकंड को A2 एंड सो ऑन. ठीक है, सो मीन ऑफ द वैल्यू इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट मीन, तो क्या हो जाएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 divided by what? 5. So this A mean is basically what? It will be more closer to the accurate value than any of this single value. है. फर्स्ट में जो मिला उससे जो मीन वैल्यू मिल रहा है वो मीन वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट होगा. क्योंकि हमने क्या किया ना, हमने 5 बार मेजरमेंट लिया, हर बार अलग अलग एरर है और उन पांचों मेजरमेंट का मीन निकाल लिया. सो ओवरऑल हमने एरर को भी एवरेज आउट कर दिया, राइट. सो इसलिए जब हमें मेजरमेंट एक्यूरेट लेना होता है ना, वी टेक मोर नंबर ऑफ मेजरमेंट सो दैट वी कैन मिनिमाइज आवर एरर. डन है. तो यहाँ पे जो एक्चुअल वैल्यू जो हम मेजरमेंट का लिखेंगे वो ए मीन होगा. डन है. सो दिस इज द एक्चुअल वैल्यू. नाउ व्हाट इज द एरर? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर? आई मीन मैथमेटिकली वी आर गोइंग टू रीड. तो सबसे पहला है तुम्हारा एब्सोल्यूट एरर. सो व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट एरर? अभी अभी 5 मेजरमेंट हमने किया, A1 A2 A3 A4 A5, है ना. और एक्यूरेट जो वैल्यू मैं बोल रही हूँ रॉड का वैल्यू हमने क्या लिखा? ए मीन. डन है. तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर इज द मीन ऑफ ऑल एरर्स. कैसे निकालेंगे? लेट्स हैव अ लुक ओवर इट. फर्स्ट में एरर कितना है? फर्स्ट मेजरमेंट में एरर क्या है? सो एक्चुअल वैल्यू हम किसको मान रहे हैं? ए मीन को. फर्स्ट वैल्यू इज हाउ मच? A1. सो एरर इज हाउ मच? A mean
माइनस A1 और इसका मॉड्यूलस लेना है आपको, ठीक है। सेकंड में अगर आप देखो, सेकंड में एरर क्या है, A मीन माइनस A2 एंड सो ऑन यू विल कैलकुलेट, राइट। सो एब्सोल्यूट एरर विल बी हाउ मच, एब्सोल्यूट एरर दैट इज एक्चुअली मीन एरर। सो इसको क्या लिखोगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई 5। सो दैट इज हाउ वी कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। आई हैव इंक्लूडेड वन क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आया भी है, जहां पे हमें 4-5 वैल्यूज दिए हुए थे एंड वी वर आस्क्ड टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट। फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट mean of all those measurements, right? Then we need to calculate error in each individual values, and then we need to take the mean of all those errors that we have got, right? And that will give us what, absolute error. So this is this, right? नाउ व्हाट इज दिस रिलेटिव एरर। तो अभी अभी हमने एक वैल्यू कैलकुलेट किया जिसका मेजरमेंट कितना था, ए मीन, और एरर कितना था, डेल्टा ए मीन, जिसको हमने बुलाया एब्सोल्यूट एरर, एंड दिस इज द ट्रू वैल्यू, राइट। अगर हमें इसी चीज में रिलेटिव एरर बताना है, एब्सोल्यूट एरर तो डेल्टा ए डन है, अगर रिलेटिव एरर बताना है तो रिलेटिव एरर क्या हो जाएगा, डेल्टा ए, चलो मीन में हटा देती हूँ, अब नाउ आई विल कॉल डेल्टा ए एज एब्सोल्यूट एरर। So delta A divided by A. Again, mean I am removing. A mean को मैं A लिख रही हूँ. So this is the true value. So error in the value divided by A gives us relative error. Done it? This is, and what is this percentage error? So nothing. Percentage of relative error is percentage error. So percentage error क्या हो जाएगा? Delta A by A into 100. So this is what we are going to get. Now, if we move on with the next combination of error, error of a sum or a difference. So we are having two values A and B. A का वैल्यू क्या है, A प्लस माइनस डेल्टा A. सो इसका ट्रू वैल्यू A है, एरर डेल्टा A है. सेकेंड ट्रू वैल्यू B है, एरर क्या है, डेल्टा B. सो व्हेन यू विल डू A प्लस B ना, सबसे पहले तो वैल्यूज को ऐड कर लो, डन है। एंड एडिशन में एरर क्या होगा, सो राइट हियर प्लस माइनस अगेन। एरर का क्या होता है हमेशा, एरर को हम हमेशा ऐड करते हैं, क्योंकि व्हेन वी आर एडिंग टू थिंग्स, मैक्सिमम एरर किसी भी चीज में कितना हो सकता है, जितना इंडिविजुअली उन दोनों में एरर्स था उसको ऐड करके मिल सकता है। डन। सो ए प्लस बी में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सो यहाँ पे आप लिखोगे डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि मिनिमम एरर के साथ हम जा नहीं सकते। डन है। अगर वी आर डूइंग ए प्लस बी, सो वी विल इंडिकेट कि उस मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर क्या है, उसी को हम लिखेंगे एज एज एन एब्सोल्यूट एरर। सो एरर को हम ऐड करते हैं। सिमिलरली इफ यू हैव टू सब्सट्रैक्ट, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ऐसा होगा, बट एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, हमेशा ऐड होगा, हमेशा याद रखना। सो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, ऐड हो गया। Now we will move on to next, error of a product or a quotient. So if you are going to divide it, डन है। सो डिवाइड कर लो, सिंपल। और एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, रिलेटिव एरर ऐड होता है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में एब्सोल्यूट एरर को हमने ऐड किया, प्रोडक्ट और डिवीजन में व्हाट वी डू, रिलेटिव एरर को ऐड करते। सो फर्स्ट में रिलेटिव एरर दिस है एंड सेकंड में रिलेटिव एरर इज दिस। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू इट। एंड इन मल्टीप्लिकेशन सेम थिंग वी विल अप्लाई। तो रिलेटिव एरर हियर आल्सो विल गेट एडेड, ठीक है। So this is how we are going to deal with it. Now, what if our physical quantity is raised to certain power? So यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास एक क्वांटिटी है z, which is equal to a का स्क्वायर, b का क्यूब, c का 4. So यहाँ a is raised to 2 power, b 3 power से raised है, c is raised by 4 power, right? ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सो सिंपल लॉजिक ये है, जो भी पावर है ना उसको आप कोएफिशिएंट में ले लो 2। सो रिलेटिव एरर इन जेड, डेल्टा जेड बाई जेड विल बी इक्वल टू हाउ मच, यहाँ ये भी डिवीजन हुआ है ना, ए स्क्वायर बी क्यू बाई सी 4, तो डिवीजन का केस है। वी विल एड रिलेटिव एरर, बट हाउ वी विल कैलकुलेट रिलेटिव एरर, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल क्वांटिटीज आर रेज टू पावर। सो दैट आई एम टेलिंग यू, ए के लिए क्या लिखोगे, 2 डेल्टा ए बाई ए, relative 2 times relative error in A plus 3 times relative error in what? Relative error in B, that is your delta B by B plus, this is a case of division, right? So we are going to add all the relative errors. So this will become 4 times delta C by C. So this is how we are going to calculate relative error in Z.
सो जेड का वैल्यू कैसे निकालोगे? जेड जेड इक्वल टू, अब क्या हम लिखने वाले हैं? जेड इक्वल टू वी विल राइट ए क्यू, ए स्क्वायर सॉरी, बी क्यू डिवाइडेड बाई C4, ठीक है, प्लस माइनस व्हाट यू विल राइट, डेल्टा जेड बाई जेड। सो डेल्टा जेड बाई जेड का वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा। सो दिस इज हाउ वी डू इट। डन है। नाउ वी विल मूव ऑन विथ more focus on questions. So let's do some questions. This All these questions are previous year question from NEET and JEE. Do it and let me know what you're getting. I will just give 1 minute for each question. Okay, I hope you have done it. So question क्या है? The de Broglie wavelength associated with a particle of mass m and energy E is written as this. So de Broglie wavelength, that is lambda, is equal to h by root under 2me. You are already familiar with wavelength, right? Wave के chapter में हमने पढ़ा है. So it's not something new term, right? You can do it. Dimensional formula for Planck's constant. So यहाँ से हमें Planck's constant का dimensional formula निकालना. It's easy, right? लैम्डा का आप डायमेंशनली लैम्डा को क्या लिखोगे? एल, राइट? एच हमें नहीं पता, ये हमें निकालना है। एंड व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एम? एम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम, और ये रूट है तो 1/2 लिखोगे आप यहाँ। और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कल ही हमने लिखा है, एनर्जी इज व्हाट? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, mlt-2 इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वन मोर एल। सो यहाँ पे स्क्वायर, ml² t-2, राइट? सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ml²t-2, इसका भी पावर क्या हो जाएगा? हाफ, राइट? टू तो कांस्टेंट है, वी डोंट नीड टू डील विद इट बिकॉज वी आर डीलिंग डायमेंशनली, राइट? सो सॉरी, just give me 1 minute. So what is the dimension of h here? अब निकाल लो, m का पावर हाफ, यहाँ भी m का पावर हाफ, सो दिस विल बिकम m, l का स्क्वायर, सो l t-2 का t-1, इसको इधर ले जाओ, ठीक है, एंड इनटू वन मोर l, सो दिस इज दिस, ठीक है। सो m l स्क्वायर t-1, करेक्ट आंसर इज योर C. Now do this question again. I am giving you 1 minute. Do this and let me know. Till you have some 10 seconds. Okay, let's do it now. To find the spring constant K of a spring experiment, the student commits 2% positive error in the measurement of time, 1% negative error in the measurement of mass, percentage error in determining value of K. So how we can relate K, M and time period? So time period is written as what? आपने पढ़ा है ना ये फॉर्मूला, 2π√m/k. दिस इज द फॉर्मूला वी नो, राइट? तो इस फॉर्मूला को, टाइम पीरियड को क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट m का पावर हाफ डिवाइडेड बाय k का पावर हाफ। डन है। नाउ इफ वी सी परसेंटेज एरर इन डिटरमिनिंग द वैल्यू ऑफ k,
तो के हाफ को आप क्या लिखोगे? के हाफ को आप लिख सकते हो 2 पाई m का पावर हाफ डिवाइडेड बाई t, राइट? इफ यू स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर विच इज ए कांस्टेंट, m divided by t का स्क्वायर. Now if we have to calculate percentage error in k, कैसे निकालेंगे हम? k is mass divided by time period का स्क्वायर. तो डेल्टा के बाई के डिवीजन का रूल यूज करेंगे. डेल्टा m बाई m प्लस 2 डेल्टा t बाई, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है. तो इफ यू लुक एट हियर, डेल्टा के बाई के, डेल्टा m बाई m कितना है? Student commits 2% positive error in the measurement of time, so that is equal to 2 into how much? 2% plus 1% negative error in the measurement of mass. मास में तुम्हारा कितना एरर है? 1% नेगेटिव एरर, सो दिस इज -1%. डन है. आई होप आई हैव टेकन फॉर्मूला करेक्टली. इट सिम्स आंसर सिम्स incorrect, I guess. Okay, let me check once. Or maybe I have written answer wrong. Okay, let me check. At the same time, you also check it. Yeah, I'm getting. Okay. So you must have got the answer. So this is how much? 2 into 2, that will become 4%, minus 1%, and that will give us how much? We are getting 3%. Actually, answer I have written as 5%. That is why I was rechecking. Uh, I will let you know this thing again in the next class. Okay? Maybe somewhere we are doing it wrong. I don't know. Or maybe I have written answer as wrong. Maybe. So, because everything seems correct to me. Or in the last, at the end of class, I will again consider it. Okay? Chalo. In the meantime, let's do this question. So again, take your 1 minute, do it and let me. Yes, I'm waiting. Do it. Let me.
Okay, I hope you have done it. So let's now do it. What is the dimensional formula of AB minus 1 in this equation, right? So, I mean, कल की क्लास में हमने डायमेंशनल एनालिसिस में देखा था दो सिमिलर अगर दो चीजें डायमेंशनली सेम है देन ओनली वी कैन ऐड देम, राइट? सो यहाँ पे P क्या है हमारा? P इज प्रेशर, ओके? क्योंकि आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ये आइडियल गैस इक्वेशन का रियल रियल गैस जब हम उसको मानते हैं तो करेक्शन क्या होता है. यू मे हैव read it somewhere, because from the physics syllabus it's removed in thermodynamics, but in chemistry maybe it's there. So here P is pressure, done है, and V is what? Volume. क्लियर है? अब आप देखो प्रेशर और A by V स्क्वायर को ऐड कर रहे हो मीन्स डायमेंशनली दे आर सेम, सो डायमेंशनली आई कैन इक्वेट देम. प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? M L T - 2. Yes. And area is L square. So this will become how much? This will become ML minus 1 T minus 2. And this is A divided by V का square. Volume का dimension क्या होगा? L cube. L cube का square क्या हो जाएगा? L6. So A का dimension क्या हुआ हमारा? ML5 T minus 2. So A का dimension हमें मिल गया. It is this. Right? And what will be the dimension of B? if you look at the second thing, v minus b हमने किया है, so दो चीजों को subtract तभी कर सकते हैं when they are dimensionally same. So b has also the dimension of volume, यानी कि dimension of b is what? L cube. डन है. एंड इफ यू हैव टू डू व्हाट, क्या करना है हमें यहाँ पे ab minus 1 करना है. तो what you will do here, ML5 T minus 2 into क्या करोगे? Into you will do L cube. So if you are going to do this, what answer we are going to get? M का power, okay, M का power 1 and L का power we are going to get, okay. I mean, I have written it correctly, right? Why we are getting again wrong, I guess. L का power क्या दिख रहा है यहाँ? 5 और ये 3 है, right? अच्छा b minus 1 करना है, सॉरी ab minus 1, तो -1 यहाँ पे दोगे ना. l का पावर 5 है, l का पावर -3 है, सो हियर वी विल गेट l का पावर 2 और t का पावर -2. सो दिस इज द आंसर, राइट? सो करेक्ट आंसर इज योर b. I mean, slight mistake or slight deviation of your brain can damage things, so we have to be highly concentrated. Let's do it. These questions are very easy though. Okay, try this question. Let me know what answers you are getting. I'm here only. Take 1.5 minutes. It has some calculation, I would say. You can take 1 minute or 1.5 minutes. Let me know your answer. Done it? आई होप यू ऑल हैव गॉट द आंसर. सो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, व्हाट यू कैन डू, टाइम पीरियड क्या क्या चार मेजरमेंट हमने लिया है, ठीक है. अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस रीडिंग्स इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर. सो सबसे पहले तो इसका मीन निकालना है. सही से लिख डालो.
4.632, and then that is 4.62, and then 4.64, and then 4.6. If you're going to add these two, and this is your 9, and this is your how much? 6, and this is 19 something, right? And this divided by what you will do? This divided by 4. I mean, there are 4 measurements, right? This is how we will calculate mean. So if you're going to do it, 4.923, 4.923, something like this. Done it? If I'm not wrong. Okay. कुछ गलत लिखा है क्या? चेक कर लो एक बार. 4.62, 4.632, 4.6, 4.64. ओके, मैंने गलत ऐड कर दिया है, सॉरी. दैट इज व्हाई वी आर नॉट गेटिंग इट करेक्ट. एनीवे, लेट्स रीराइट इट. सो लेट्स राइट इट करेक्टली. 42883 मैंने ऐड गलत किया. दैट इज 1 हियर, and this is your how much? 36. So 1 is left, 7, and this is this. Okay. Okay. Divided by 4. Actually, today my health is not okay. I'm really getting confused with calculation. I'm really sorry. So you just need to divide it. Take the help of calculator. I'm not going to, I mean, bother you. I will take the help of calculator. I'm really sorry. So let me add it fast because otherwise you will get confused. So what is this? 4.632 plus what you are going to do? 4.64, and then 4.6 plus how much? 4.62, right? That is what I missed, I guess, 4.64. So if you will add these two, what we are going to get? We are going to get 18.512. And if you're going to divide it with 4, what value we will get? We will get 4.628. Now let's come to the concept. हमें क्या लिखना है? करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर तक. तो हमने क्या किया? यहाँ पे एडिशन किया है, राइट? वी हैव एडेड दिस थिंग्स. और एडिशन में रूल क्या फॉलो करते हैं? डेसिमल के बाद चारों में देख लो किसमें मिनिमम प्लेस है. सो मिनिमम प्लेस क्या है? यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 1 है. सो आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 प्लेस होगा. सो हमें 2 को ड्रॉप करना है, एंड सिंस 2 is less than 5, we will simply drop it and we will write it as 4.6. So correct answer is what? 4.6. And so option will be B. Chalo, let's do it now this thing. Take your 1 minute, do it and let me know. So I hope you have got the answer. The equation of a stationary wave is given as this. Which of the following is not correct? ठीक है. So dimension of nt. अब यहाँ पे देखो क्या क्या है? 2 pi nt by lambda is given here, right? 2 पाई एन टी बाई लैम्डा. एंड कल के क्लास में हमने पढ़ा था साइन के अंदर जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा. ठीक है. सो दिस होल इज डायमेंशन लेस. 2 पाई इज कांस्टेंट. ठीक है. सो एन टी बाई लैम्डा क्या होना चाहिए? डायमेंशन लेस. लैम्डा का डायमेंशन क्या है? लेंथ.
तो एनटी का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। सो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ एनटी इज एल, ये तो करेक्ट है। हमें आंसर क्या करना है, विच इज नॉट करेक्ट, ऑलवेज रीड क्वेश्चन केयरफुली। सो ये तो करेक्ट हो रहा है, तो इसको हम आंसर नहीं कह सकते, सो ऐसे कट कर रही हूं मैं। डायमेंशन ऑफ एन इज दिस। सो एन टी का डायमेंशन क्या लिखा हमने, इसका डायमेंशन लिखा एल। अब इनका डायमेंशन अलग करो, टाइम का डायमेंशन टी, एंड दिस इज इक्वल टू एल। सो एन का डायमेंशन क्या हो गया, एन का डायमेंशन है एल टी माइनस वन, ये भी करेक्ट है। सो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। डायमेंशन ऑफ एक्स इज एल। नाउ कम टू दिस, कॉस के अंदर एंगल है, इसका भी वैल्यू क्या होने वाला है, एंगल, आई मीन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो उसके अंदर जो भी एंगल है उसका डायमेंशन क्या होगा, नथिंग। सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, टू पाई एक्स बाई लैम्डा। टू पाई बिंग कांस्टेंट, नो डायमेंशन, लैम्डा का डायमेंशन लेंथ है, तो एक्स का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, लेंथ होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है, डन है। नाउ द डायमेंशन ऑफ एन बाई लैम्डा इज टी। एन बाई लैम्डा, एन का डायमेंशन हमने क्या लिखा, एल टी माइनस वन, लैम्डा का डायमेंशन क्या होता है, एल। सो इसका डायमेंशन क्या है, टी माइनस वन है, टी नहीं है, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एंड हेंस इट इज करेक्ट, because we have to tell which of the following is not correct. So that is this. Now do this question and let me know. Okay, take your time. I'm here only. You can ask any doubts if you're getting in between. Okay.
Oh my God. My audio was off actually. I'm really sorry. I hope you followed. Okay, do this question, let me know. Since you're not in the class, I mean, nobody's in the class, that's the fault. That is where blunders are happening. I mean, my mic was off. Nobody was there to tell me, and I just took one or two question, I guess, with that. I don't know. Anyway, let's see. Sorry. Take your time. This will be your last question of the session. Do it. Okay, let's see it. The electrical circuit, voltage is measured at this, current is measured at this, the value of resistance. So resistance is written as what? Current को आप क्या लिखते हो? Current को लिखते हो V by R. So resistance को क्या लिखोगे? V by I. So if you are going to do V by I, V is how much? This is 200. I is how much? That is 20. So this will give you how much? 10. So absolute value is 10. Now let's deal with the error part. So when we divide, we add relative error. So अगर आप देखो तो first का relative error कितना है? I mean delta R by R को आप क्या लिखोगे? Delta V by V plus delta I by I. This is what we are going to do, right? So delta V by V कितना होगा? Delta V is 4, V is 200 plus delta I is how much? That is 0.2 divided by 20. So what value we are going to get? We will get 2 by 100, that is 0.02 plus 0.01. So done है. What is the value we are going to get? 0.03. Done है. लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में 0.3 इज गिवन एक्चुअली विच शुड नॉट बी गिवन, क्योंकि अगर आप क्लियरली देखो यहाँ पे डेल्टा वी इज 4 बाई 200, इसको करोगे तो 0.02 आएगा, राइट? है ना? 0.02 आ रहा है एंड दिस इज 0.2 बाई 20, so that will be 0.01, so this should be 0.03. I don't know why this is given like this. So correct option should be what? Correct option should be B. With modification, answer will be 10 plus minus 0.03, not 0.3. Because delta, again, I want to recheck it. Delta V is 4 by 200, right? So this is giving us 0.02, and this is, yeah, that will be the answer. Okay, thinking that whatever we calculated was correct. In this question, we got 3%, right? And answer given was 5%. Again, time period is 2 pi root under m by k we did, square we did, and we got this. Since there was negative error here, 1% negative error in measurement of mass. And that is why I wrote it like this. So answer should be 3%. Anyway, I will let you know in the previous class. Sorry, in the next class. This class में बताना possible नहीं है, sorry. Done है? And in the next class, we will be starting with probably gravitation. Done है? We'll take one class for that. Simply, we will do the question. And I will start with this particular question. If some error has happened, I will let you know. ठीक है? चलो. Okay. So everyone take care of yourself. Stay safe and healthy. And keep reading. Bye. Take care, everyone.